Good evening again. So today we are going to start a new chapter, mensuration. We have completed the last chapter in the last class, and I think none of you have any questions about that particular chapter. And I also hope that you have solved the remaining examples that we didn't take in class. Right? Please solve all the examples. If you have any doubt, you can ask me. And those people who are joining a bit late, Aidur and who's who is it? Bhalchandra Kurte, Anand. Okay, sorry, Anand. So Anand, you have to join 2 minutes before the class starts, right? So you have to join around 7:55 to 7:58. You cannot join. Sorry, 6:55 to 6:58. Okay, you cannot join after 7 because that will be considered as late, right? So please be on time so that our time is not wasted. Is it? Okay, so the new chapter that we are going to start is mensuration. This is our 11th chapter from the syllabus, and from the second term syllabus, I believe this is third or fourth chapter, right? So shall we start? So see, introduction. What is mensuration? First of all, we need to know that. So we have learned that for a closed plane figure, a perimeter is the distance around its boundary, and its area is the region covered by it. So we know what is perimeter and what is area. Now we found the area and perimeter of various plane figures such as triangles, rectangles, circles, etc. We have also learned to find the area of pathways or borders in rectangular shapes. In this chapter, we will try to solve problems related to perimeter and area of other plane closed figures that are quadrilaterals. So we'll also learn about surface area and volume of solids such as cube, cuboid, and cylinder. Okay, so that was the basic introduction, what we have already learned and what we are going to learn in this chapter, right? So let us recall. So we have learned these things, but we are just going to revise it again. So this is a figure of a rectangular. यहाँ पे जो figure दिख रही है, this is a rectangular, right? This is a rectangle. This is a rectangular park. Now, its length is 30 meters and its width is 20 meters. Now, what is the total length of the fence surrounding it? To find the length of the fence, we need to find the perimeter of this park, which is 100 meters. मतलब इसके जो corners, इसके जो sides है, corners नहीं sides, तो ये sides की length क्या है in total, और इसका जो fence इसकी length क्या है? So how we are going to calculate it? We just have to add all of the sides. So 30 plus 20 plus 30 plus 20, that is 50 plus 50 is 100 meter would be its perimeter, or its the length of its fence, right? So how much land is occupied by the park? Now to find out the land occupied by this park, we have to simply calculate the area of this rectangle. So how can we calculate area of a rectangular surface or rectangular plane? We just multiply its length with its width, right? इसका length और width का हमें multiplication करना है. We are going to get the area. So in this case, 30 into 20, that is going to be 600 square meters, right? So there is a path of 1 meter width running inside along the perimeter of the park that is to be cemented. If 1 kg of cement is required to cement 4 meter square, how many bags of the cement would be required to construct the cemented path? Now, one more additional problem that we have here is, देखिए यहाँ पे इस पार्क के अराउंड, नाउ दिस टोटल पार्क की जो लेंथ है वो है 30 मीटर्स एंड विड्थ है 20 मीटर्स. नाउ इस पार्क के अंदर एक साइड वे पाथ है. सो इस पाथ को हमें क्या करना है? सीमेंट करना है, मतलब इसको कंक्रीट करना है, राइट? सो इसके लिए द एक्सपेंस नॉट द एक्सपेंस, द सीमेंट वुड बी रिक्वायर्ड, मतलब एक बैग में 4 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर होने वाला है. Okay, now what is our next task? Our next task would be to find out area of this particular path. ठीक है, ये जो पाथ यहाँ पे दिख रहा है इसका पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, और उसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, so we'll get the number of bags, number of cement bags that would be required to
cement this path, right? So कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? नाउ सी, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है। दैट मीन्स लेंथ में से 2 मीटर्स घट गया, दैट इज 28 मीटर वुड बी लेंथ, isn't it? And 18 मीटर वुड बी width, ठीक है? 28 and 18 would be length and width respectively for the park excluding that path। उस पाथ को छोड़ के कितना एरिया हमें मिलने वाला है? 28 इंटू 18। सो कोई कर पाएगा? करो, 28 इंटू 18 कितना होता है? 28 इंटू 18, सो दिस इज गोइंग टू बी 504 समथिंग, बराबर? So 504 will be area of that park excluding the path। उस path को छोड़ के जो एरिया वो 504। Now who will tell me the area of path? उस path का एरिया कितना हुआ? पार्क का एरिया था, टोटल कंप्लीट पार्क का एरिया था 600 मीटर स्क्वायर, राइट? और जो एरिया ऑफ पार्क है एक्सक्लूडिंग द पाथ वो है 504 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया में से 504 सबट्रैक्ट करना है। सो हाउ मच वुड बी द एरिया ऑफ दैट पाथ? आर यू पीपल एबल टू लिसन मी? आपको सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर मी? यस, सो यू हैव टू पुट आंसर्स क्विकली। जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, just have to put the answer, okay? Please keep your notebook with you also, and please keep replying fast। So 96 meter square would be the area of that path। Now abhi we have to find out how many number of bags would be required to cement that path। So 96 मीटर स्क्वायर का एरिया है और एक बैग में 4 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो जाता है। सो हाउ मच और हाउ मेनी बैग्स विल बी रिक्वायर्ड? 96 डिवाइडेड बाय 4, 96 divided by 4, right? 24 bags would be required, right? Or is it 28? I think it should be 24। I don't think it is 24 only। 24 ही है। 96 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, so it is going to be 24 itself। Now, there is no chance of 28, correct? Let's move forward। Now there are two rectangular flower beds of the size 1.5 meter into 2 meters in each part as shown in the diagram, and the rest has grass on it। Find the area covered by the grass। तो सिंपली हमें क्या करना है? अभी ये जो एरिया मिला है 504, इसमें से ये जो एरिया मिलेगा यहाँ पे जो कि होगा 3 मीटर स्क्वायर, 2 into 1.5 is 3 मीटर स्क्वायर। तो 3 मीटर स्क्वायर के दो पैचेस हमें सबट्रैक्ट करने हैं। So 504 minus 6 is going to be 498। 498 meter square would be the area of grass on the ground। Okay, so we have done these calculations already। Now we are going to revise few of the formulas for area। So rectangle का जो area है, so it should be okay। What we have to do here, we can find areas of geometrical shapes other than rectangular also if certain measure। Try to recall the and match the following। Okay, हमें मैच करना है, ठीक है? तो सबसे पहला जो है वो रेक्टेंगल है, बराबर? ये पहला रेक्टेंगल ही है। ओके, एंड इसका जो एरिया रहेगा दैट इज गोइंग टू बी, टेल मी व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर। डू वी हैव हियर? ठीक है, यहाँ पे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी A into B, exactly। Second one is a square। स्क्वायर का एरिया होगा A into A। This is a triangle। ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट? पैरेललोग्राम का एरिया क्या रहेगा? पैरेललोग्राम का एरिया रहेगा बेस इंटू हाइट, एंड सर्कल का एरिया इज पाई
into radius square. यहाँ पे b जो है वो radius है, right? So this is how we can pair them or we can match them. ठीक है. Now the following figures with their respective areas in the box. ठीक है. तो अभी इसका एरिया क्या रहेगा? यहाँ पे जो पैरेललोग्राम दिख रहा है इसका एरिया क्या रहेगा? विल टेल. यहाँ पे ऑप्शन तो ये भी है. What would be the area of this parallelogram? आप फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पे. क्या है फॉर्मूला पैरेललोग्राम के लिए? Base into height. So base is 14, height is 7, so it is going to be 98, correct? Area of this half circle, ये जो half circle है ना इसका एरिया निकालना है. 1/2 into pi into r square. 11 into 7, 77 centimeter square, right? 77 centimeter square is half circle का जो area है. I'm talking about area, not the perimeter. Okay, so it is going to be 77 meters square, right? Yeah, correct. Okay, so this is a triangle. We can find out the area of triangle. This is again a rectangle, very simple, and square. So square का area जो है 7 into 7, that is going to be 47 centimeters square. Now we have exercise, and in this exercise, I think there are very basic questions out there, right? So we will not take basic questions, but we'll try to take some questions that are a bit difficult. Okay, so let's take one of the 5. Which question should I take? Okay, let's take this one, third one. This seems to be something different, isn't it? So let's take third one. The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. So find the area and the perimeter of this garden. करो find out कैसे करना है? चलो let's go thoroughly. सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस एंड दिस पोर्शन. देखो समझने की कोशिश करो, अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज टेल मी, ठीक है? सो अगर इसका जो डायमीटर है इट इज 7 मीटर्स, सो इसका जो रेडियस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 3.5 मीटर्स. ठीक है, ये जो सेमी सर्कल यहाँ पे दिया है ना, इस सेमी सर्कल का डायमीटर सॉरी रेडियस कितना रहेगा? 3.5 मीटर्स. सिमिलरली फॉर द लेफ्ट वन, मतलब लेफ्ट वन का भी 3.5 सेंटीमीटर ही रहेगा, नॉट सेंटीमीटर, इट्स मीटर्स. ठीक है, तो दोनों का मिला के कितना हुआ? 7 मीटर्स हुआ. यस और नो? दोनों सर्कल का मिला के जो लेंथ है टोटल दैट इज गोइंग टू बी 7 मीटर्स. समझ रहे हो ना? और एनी कंफ्यूजन? आपके आंसर्स नहीं आ रहे, सो आई फील you are having some confusion. Students, are you able to understand it? Are you able to hear me? Are we connected in the first place? Yeah, it's clear. Okay, thank you for your confirmation, Shloka. What about others? Are you not attending the class? Okay, everyone just put yes in the chat box. I just wanted to know how many of you are still there in the class. Yes, it's clear. Okay, Aidur, okay, Shlok, okay, Priyal, I see 3 of you are there. What about others? बाकी लोग नहीं है क्या यहाँ पे? सिर्फ 3 ही है. Who's not there? Vivek is not there, I guess, and Anand is not there.
right? Vivek and Anand are absent in the class, even though they are in the class. Anyways, let them be absent. Okay, so यहाँ पे 20 में से 7 निकालोगे तो इट इज गोइंग टू बी 14 मीटर्स. तो मतलब ये जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी 14 मीटर्स, बराबर ना. और ये 14 है और ये 7 है. तो 14 इंटू 7 कितना हुआ स्टूडेंट्स? 98. ये क्या हुआ? इस रेक्टेंगल का एरिया हुआ 98 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. समझ आया? 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर्स इंटू 7 मीटर्स. ठीक है. नाउ क्या बचा? एक सेमी सर्कल राइट में है, एक सेमी सर्कल लेफ्ट में है. दोनों का रेडियस डायमीटर सेम ही है. दैट मींस इफ वी जॉइन देम तो एक फुल सर्कल बन जाएगा. और नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सर्कल. इसका रेडियस है 3.5 या 3.5 मीटर स्क्वायर, सॉरी 3.5 मीटर. इसका रेडियस 3.5 है. तो आपको क्या करना है? पाई इंटू आर स्क्वायर करना है फॉर फाइंडिंग द एरिया. isn't it? So करो. Pi is nothing but 22 divided by 7 into 3.5 into 3.5, right? So 11 into 3.5 ऐसा कुछ तो आएगा. 38.5. perfect. 38.5 would be the area of that circle. और rectangle का कितना है? 98. So if you add that, how much it is going to be? 136.5 meter square would be the area of this whole ground, right? Whole garden, whatever it is. ठीक है? 136.5. yeah. Now we have to find out the perimeter. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर? सर्कल की पेरीमीटर पहले फाइंड आउट कर लो. व्हाट इज इट? 2 पाई आर और पाई इंटू डी. डी इज डायमीटर. डायमीटर कितना है यहाँ पे? 7 है. तो सर्कमफ्रेंस कितना आएगा इसके सर्कल का? पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस व्हाट एवर यू कॉल. पाई इंटू डी मतलब 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. 22 वुड बी circumference of this circle, right? So यहाँ पे ये जो लेंथ है, which length? This length is 22 meters. now अभी हमें ये वाली लेंथ ऐड करनी है, ये वाली लेंथ ऐड करनी है. so आपको याद है ये कितना था? ये था 14. तो ये भी 14 ही होगा. so 14 plus 14 is 28 and 28 plus 22 is 50. So 50 is going to be the perimeter of this complete garden. Right or wrong? सही किया या फिर गलत किया? Yes, correct. और shall I add this also? ये ऐड करने की जरूरत है. ये जो लेंथ है 7 मीटर और ये 7 मीटर, we need to add it. I don't think so. क्योंकि हमें ग्राउंड की पेरीमीटर निकालनी है, राइट? सो वी आर इग्नोरिंग द इनर पार्ट्स. ठीक है? ओके, दैट्स इट. नाउ एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम. Nazma owns a plot near main road. Unlike some other rectangular plots in her neighborhood, the plot has only one pair of parallel opposite sides, so it is nearly a trapezium shape. Can you find out its area? ठीक है. अभी ये जो नज़मा का फील्ड है या फिर प्लॉट है और एक रोड के साइड में होने की वजह से ये रोड है, ठीक है, एंड दिस इज द प्लॉट.
So this is not perfectly rectangle or square, it's more like a trapezium. ठीक है, ये परफेक्ट ट्रेपेजियम भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक कर्व है, बट वी हैव टू ट्राई एंड फाइंड आउट इफ वी कैन कैलकुलेट इट्स एरिया। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। नाउ वी आर कंसिडरिंग, सी ये जो लेंथ थी ये 30 मीटर है और ये जो है वो 10-20 मीटर, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो एक थोड़ा सा एरिया बच रहा है दैट इज 10 मीटर्स, एंड दिस इज अगेन 20 मीटर्स, दिस इज 20 मीटर्स, और यहाँ पे जो दिया है बेस दैट इज 12 मीटर्स, वो तो ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो वी आर फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट एरिया हियर, बिकॉज यहाँ पे कर्व है तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, एंड वी आर कंसिडरिंग दैट दिस प्लॉट इज लाइक ए ट्रेपेजियम। Okay, so we are going to find out the area of this trapezium. तो वो कैसे निकालेंगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो पहले ECD का एरिया फाइंड आउट करो, उसके बाद में ABCE इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करो, पहले इस ट्रायंगल का, ठीक है, और उसके बाद में इस रेक्टेंगल का। तो इस तरीके से हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो ट्रायंगल का एरिया है 60 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया है 240 मीटर स्क्वायर। Now area of trapezium is going to be addition of both, that यानी कि approximately 300 meter square would be the area of the trapezium. We can write the area by combining two areas and write area of a trapezium as. So see, first of all 1/2 height into c, ये रहा ट्रायंगल का एरिया, राइट। उसके बाद में h into a, that is area of रेक्टेंगल। अभी h क्या है, a क्या है, यहाँ पे ये वैल्यूज मैटर नहीं करती, दिस इज कंसिडर्ड एज लेंथ एंड विड्थ। ओके, h क्यों दिया है अभी, h तो हम हाइट के लिए यूज करते हैं, लेकिन व्हाई इट इज गिवन h, सो दिस इज जस्ट अ रैंडम वेरिएबल, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, वी जस्ट हैव टू कंसीडर कि h into a का मतलब है लेंथ इनटू विड्थ। सो अगर हम इसे ऐड करने की कोशिश करें, इस फॉर्मूला को एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, सो h कॉमन निकाल सकते हैं हम, and we can have c/2 plus a. Okay, now h in bracket c plus 2a by 2 कैसे किया, इस 2 से इस a को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, so c plus 2a by 2, then we have h into c plus a by 2। अब इस 2a को क्या कर दिया, a plus a कर दिया, a plus a कर दिया। now height is equal, और सॉरी वही फॉर्मूला क्या बना फिर, h is equals to b plus a divided by 2। now what is b, b क्या है यहाँ, b is c plus a, where is c, this is c and this is a, ठीक है, तो ये टोटल मिला के बना b। तो we have a formula, height into sum of parallel sides divided by 2। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें क्या मिला, हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। by substituting the values of h, b and a in this expression, we again get the same answer as 300 meter square। ठीक है, now Nazma's sister has also a trapezium shaped plot divided into 3 parts as known as shown in this figure। so show that the area of trapezium WXYZ is equals to h into a plus b divided by 2। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप फॉर्मूला निकालोगे, उसके बाद में इसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो आप लिखोगे, एंड देन यू विल हैव थर्ड फॉर्मूला, दिस वन फॉर दिस ट्रायंगल यू विल हैव फॉर्मूला फॉर एरिया। ठीक है, तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, सो इन द एंड यू हैव टू अचीव दिस रिजल्ट, मतलब h into a plus b divided by 2। so ये आप ट्राई करो, right? so this is going to be very interesting। I'm not taking this because this is going to be a bit time consuming, and I believe we have very short time, right? yeah, okay, let's move further। now find the area of following trapeziums। तो इसका एरिया फाइंड आउट करो। चलो, जो फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है 7 centimeter and 9 centimeter are the lengths of
parallel sides and 3 centimeters the height. Just find out the area. I'm waiting for your answers. Will not move forward until all of you put the answer in the chat box. For the first question. Okay, I can see answers coming as 24, 40. ठीक है, एक आंसर 40 आया, बाकी का 24 आया. So which one is correct? Sum of parallel sides is 7 plus 9, 16. So 16 divided by 2 is 8 and height is 3. So 8 threes are 24. So 24 meters square is going to be the area of this first trapezium. Okay, Shlok has found area of second trapezium as well. That's good. 45 centimeters square. Okay, Aidura has also found it out. Good, good, good. Very good. Okay, let's take the next example or the point, whatever it is. I heard waiting for us. Okay, we all know that all congruent figures are equal in area. We can say figures in equal in area need to be congruent too. Are these okay? So there's something you have to examine. Let's not get into it. So area of general quadrilateral. So general quadrilateral can be split into two triangles by drawing one of its diagonal. So this triangulation helps us to find formula for any general quadrilateral. So study this figure and we'll have some formula. Okay. So why we need a formula for area of a quadrilateral? हमें तो पहले से पता है, right? So let us suppose we have a quadrilateral rectangle. Rectangle is also quadrilateral, right? This is a special type of quadrilateral, that's for sure. So rectangle का formula तो हमें पता है, L into W, length into width. वो रहा एरिया का फॉर्मूला, राइट? स्क्वायर के लिए क्या है? ए स्क्वायर. ए स्क्वायर, ए इज साइड, तो ए स्क्वायर हम करेंगे. सो दैट्स इट. सो लेट अस सपोज इफ वी हैव quadrilateral which is neither rectangle nor square. So in that case also we should be able to find out its area. So then we are trying a generalized formula. Okay, so let's see how we can derive that. Okay, Anand has also found it out. I think it's Anand, right? Or Vivek. I think Vivek found it out. Second का जो है, ठीक है, 45 सही. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल ए या फिर इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को we'll divide it into two triangles. Triangle one would be ABC here, and second triangle would be ADC. ठीक है, तो इसको हमने नेम भी दे दिए कि this is height 1, this is height 2, H1, H2. So पहले ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, 1/2 into AC into H. देखो ये AC is base and height, 1/2 into base into height. Similarly for AC into H2, 1/2 AC into H2. So here we have 1/2 AC common आएगा and H1 plus H2 would be in separate brackets. So 1/2 D into H1 plus H2, where D denotes the length of diagonal AC. So
diagonal AC, यहाँ पे D is diagonal and H1 and H2 are heights. So let's find out, let's take an example. So find out area of quadrilateral PQRS as shown in figure. In this case, D is 5.5 centimeter. D की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है डायगोनल की. Height 1 है 2.5 centimeter, height 2 है 1.5 centimeter. So simply we have to put all the values in the formula. We have nothing to find, right? D की वैल्यू रख दी 5.5, H1 की रख दी 1.5, H2 की रख दी 1.5. So it is 2.5. 2.5 plus 1.5 is 4. 4 into 2. So यहाँ पे ये 2 5.5 is 11 centimeter square. So its area is going to be 11 centimeters square. Okay, so area of special quadrilateral. So area of rhombus. Area of rhombus अगर हमें find out करना है तो let's see the figure. So this is a rhombus, and what we are doing again here is we are dividing it into two triangles. Triangle ACD and triangle ABC. Okay. So पहले तो ट्रायंगल ACD का हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे, फिर ABC का निकालेंगे. We'll add them both and we'll have this formula 1/2 D1 into D2. So D1 क्या है, D2 क्या है? These are, what is this? D1 and D2 क्या है यहाँ पे? 1/2 D1 into D2. D1 and D2 क्या है यहाँ पे? Diagonals. Diagonals of this rhombus. Right or wrong? Yeah, diagonals of this rhombus. So yeah, we have this formula, students. Write down the formulas. Okay, area of general quadrilateral. Formula रहेगा is equals to 1/2 D in bracket H1 plus H2 bracket close. जहाँ पे कि D is the length of the diagonal. H1 and H2 are heights. ये लिख लेना है. दूसरा फॉर्मूला ये लिख लीजिए, एरिया ऑफ rhombus. Area of rhombus is equals to 1/2 into D1 into D2, where D1 and D2 are its diagonals. तो अभी तो आसान हो गया. If we have question, find out the area of rhombus whose diagonals are 10 centimeter and 8.2 centimeter long. So what we are going to do? 1/2 into 10 into 8.2. मतलब 5 into 8.2, that means 41 centimeter square is the area of the rhombus. That's it. Define the area of these quadrilaterals. Second one is a rhombus. Third one is okay. Can you find out the area of third one? Can you find out the area of third one? Let's find out the area of third one. $16. Okay. H1 plus H2 is बताओ कितना है? H1 plus H2 is 4. Yeah, 2 plus 2. D is 8. 4 into 8 is 32, and 32 divided by 2 is 16. Yeah, correct. Very good and very fast. Okay, good, Vivek. Good, slow, real. You people are replying so fast, and I'm very happy with you. Okay, well done. So, area of a polygon. Now हमने quadrilateral का area देख लिया. We'll try to find out area of a polygon. So see, this is a polygon, and what we are doing here is we are dividing it into
multiple figures. Multiple figures in the sense that we are trying to divide it into such figures for which we know the formula of area. मतलब ये जो पॉलीगॉन है इसको पहले तीन ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया. दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन. इस यहाँ पे भी ये एक ट्रायंगल हुआ, ये एक ट्रेपेजियम हुआ, ये एक ट्रायंगल हुआ और ये एक ट्रायंगल हुआ, राइट. एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू find out their individual formula of areas. area का formula find out करना and we have to add them. Okay, so let's take one of the example. ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे एग्जांपल जब लेते हैं ना तो थोड़ा सा समझ में ज्यादा आता है. ठीक है, let's take this one short example. Third, there is a hexagon MNOPQR. Hexagon MNOPQR, and Aman and Ridhima divided into two different ways. मतलब अमन ने क्या किया, इसको दो क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड कर दिया. सी दिस इज अगेन अ ट्रेपेजियम. ओके, ये दो ट्रेपेजियम्स हो गए. दिस वन इज वन एंड दिस इज द सेकंड वन. रिधिमा ने क्या किया, वन ऑफ देम इज ट्रायंगल, अदर वन इज ट्रायंगल एंड द थर्ड वन इज रेक्टेंगल. ठीक है, तो पहले हम अमन की मेथड देखते हैं कि अमन ने जो मेथड से इसका एरिया फाइंड आउट किया वो मेथड क्या थी. लेट्स सी अमन्स मेथड. तो अमन की मेथड से अगर हम जाएंगे, सिंपली नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MNQR. ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता है, राइट. व्हाट इज इट? This area of trapezium. So, do you have written? Height into addition of parallel sides divided by 2. Correct. Now what is height here? इस ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइट कितनी है, 8 है. तो मतलब ये कितनी रहेगी, 4 रहेगी. ये भी 4 रहेगी, राइट. सो हाइट तो मिल गई 4. a प्लस बी कितना हुआ, a प्लस बी यानी कि समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स. सो पहली पैरेलल साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरी पैरेलल साइड है 11 सेंटीमीटर. तो 11 प्लस 5 divided by 2. No, 11 plus 5 is 16. 16 divided by 2 is 8. 8 into 4 is 32 centimeters square. This is the area of this particular hexagon. No, sorry. It's area of this trapezium. One of the trapezium. दूसरे ट्रेपेजियम का भी एरिया सेम ही रहेगा, जो पहले का है वही दूसरे का भी रहेगा, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल. सेम ही है वो, एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस hexagon MNOPQR. That is done. Now Ridhima's method अगर हम देखें तो Ridhima's method में हमें क्या करना है, we have to first of all find out the area of this triangle first. So कौन सा एरिया, MNO, then MOPR and then RQP. So MNO का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, 1/2 into base into height. Base is 8 सेंटीमीटर. बेस का यहाँ पे पता है हमें. No, this is 11, this is 5. मतलब टोटल में से निकालोगे तो आप यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा. That means height is 3 centimeters. So 1/2 into 8 into 3. So 12 centimeters will be area of this triangle and this triangle. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 12 centimeter square. 12 centimeter square. Now MOPR का एरिया कितना रहेगा, 8 into 5, that is 40 centimeter. So 40 plus 12 plus 12, that is 64 centimeter. मतलब हम इस मेथड से फाइंड आउट करें या फिर इस मेथड से फाइंड आउट करें, we are going to get same area, that is 64 centimeter square. ठीक है, so this is how we calculate the areas of polygons. Okay, so exercise 11.2.
There are 8, 10, 11 examples over there. So I request all of you to please try to solve all of them. अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको मुश्किल जाता है, so please let me know. We'll discuss that in the next class for sure. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक पॉलीगॉन का एरिया का एग्जांपल लेके शुरू करेंगे, एंड देन we'll see rest of the topics. That makes sense? ठीक है, so please try to solve all of the questions. 11 questions solve करने की कोशिश करो, मैं पूछूंगा if you have done it or not. ठीक है, all right, so that's it for today. Okay, you have already solved for 11 points. Okay, so even if you have solved it, please do it again, because that is going to give you a revision, right? So revision is very important and it's very beneficial. Okay, so it's nothing wrong in doing it again, isn't it? Isn't it? Right? Yeah, so please do it. Okay, so ठीक है students, let's meet on the next Wednesday. Let's meet virtually in this class, online class. Okay. Till then, take care and keep studying. I'll see you in the next class. You all are now free to leave the class. Bye bye. Yeah, bye. Bye bye, everyone. Please leave the class. Yeah, bye.